Okay, E0 values in oxidizing and reducing agents. Now, looking back at what we did following the values of E0 for each of these reduction reactions, there we see that they get more negative. So how are we going to code it? The species on the left of the equation become the species on the left of the equation become weaker oxidizing agents because they accept electrons less readily. However, the species on the right are stronger oxidizing agents because they accept readily those electrons. Okay? Copper will not reduce zinc plus 2 ions to zinc. So how can we reduce zinc 2 plus ions? The answer is to react the zinc plus 2 ions with a stronger reducing agent, of course, okay, which would have an E0 value more negative than the E0 value for zinc itself. Okay. In figure 20.18, let's go back to figure 20.18 a little bit. Yeah. In figure 20.18, you can see something that has a more negative value than zinc can, of course, would be able to reduce zinc ions. Now, taking a look at this diagram, uh, let's ask Aisha. Aisha, which substantial species has a more negative value than zinc? Zinc ions are Sir, magnesium. magnesium, of course. So magnesium would be able to reduce zinc. Okay, and that we have studied back in IGCSE in terms of reactivity of metals as well. But as here we're going to handle metals, non-metals, and ions. So you're not going to depend upon reactivity at all. What you're going to do is that you're going to look for a more negative or a more positive value, whatever the case may be. In this specific case, as we are talking about something better than or more negative, has a more higher negative value for E0 than zinc ion cell, then we need to go with magnesium. I hope that explains it, that for a more negative value, we would be able to go for a stronger reducing agent. Okay. So that's the same thing written over here. Zinc ions minus 0.76, magnesium ions minus 2.38. So zinc positive 2 is a better oxidizing agent. It is more likely to accept electrons from magnesium plus 2 ions. Magnesium is a better reducing agent. It is more likely to release electrons than zinc. Okay. So I hope we can explain both of them in the same way. Now take a look. They're explaining the left-hand side of the equation, zinc plus 2 and magnesium plus 2 in the first lines. And in the next lines, they're explaining the right-hand side of the equation, zinc and magnesium. So you should be very careful when reading the question or attempting or answering a question in case of A2, that which ions or which species or which metal you need to talk about. So be very careful if they're asking a question about ions, talk about ions, talk about the left or the right hand side of the equation as per your requirement. Clear? So moving on, nitric acid is a good oxidizing agent, but it will not oxidize chloride ions to chlorine. So how can we oxidize chloride ions? The answer is to react chloride ions with a stronger oxidizing agent, which should have an naught value more positive than the E naught value for chlorine chloride cell. The half equation for manganate would provide a suitable oxidizing agent. So it means when we are trying to find reducing agents, we need to go for a higher negative value, while we are trying to, if we are trying to find oxidizing agents, we need to go for a higher positive value. Okay? This explains all of it. So acidified amino negative would be a more suitable oxidizing agent in order to oxidize chloride ions back to chlorine gas, as given in the example, as given in the equations. Okay? As the E naught value of amino negative acidified ions is plus 1.52, which is a bigger value than for chlorine chloride ions, which is 1.36. So it would act as a better oxidizing agent. And the same thing is written in the line below it, as acidified manganate ions are actually better oxidizing agents than the chloride ions. So they're more likely to accept
electrons from chlorine molecules, converting them into chloride ions. However, chloride ions would be better reducing agents. It is more likely to release electrons from Mn2 positive. Okay? So we can explain the relative oxidizing abilities or of the halogens in the similar way. Take a look at the halogens. In this case, in this example, we are only considering halogens, starting from fluorine all the way to iodine, being converted by a reduction reaction into their respective negative ions. You would see that the fluorine has the highest positive E0 value as compared to chlorine, bromine, and iodine. Based on these E0 values, as we go down the group 17 from F2 to I2, the oxidizing ability of halogen decreases, and the ability of halide ions to act as a reducing agent increases. I hope this example is clarified by these two sentences. If you still have a question, please ask. No, sir. Okay. So if we use them for reactions, take a look. Chlorine water is being used. Aqueous chlorine easily displaces bromine from a solution of potassium bromide. We can use E0 values to explain why a halogen higher in group 17 displaces a halogen lower in the group from a solution of its halide ions. Okay. These are the experiments that we have previously performed in AS. So I don't think this should be a problem because it has been performed in AS by your own hands. It's just that we are explaining the same thing, not on the reactivity basis, but on the standard E standard values. Okay. So moving on, what does the value of E naught vary? How does the value of E naught vary with ion concentration? So let's talk about their concentration as well. Okay. In chapter number 8, we saw the position of equilibrium reaction is affected by changes in concentration, temperature, and pressure. It was actually Le Chatelier's principle that we studied back in chapter number 8. Now, redox equilibria are no different. In case of a reduction oxidation reaction, if a dynamic equilibrium is achieved, the reaction is no different. That dynamic equilibrium can always be disturbed with the factors like concentration, temperature, and pressure, and can be easily shifted to any of the sides. You may shift it towards right, you may shift it towards left, and by bifurcation towards a forward or a reverse reaction, respectively. Now, if we compare the voltage of a standard half cell X with a standard hydrogen electrode, we are measuring E0 values for half cell X. Okay? If we change the concentration or temperature of half cell X, the electrode potential value also changes. So using these factors, concentration, temperature, pressure, we can talk about E potential values. Under the non-standard conditions, the symbol E for electrode potential is used. Of course, E naught stood for standard conditions, and when we are not going to discuss them at standard condition, of course, non-standard conditions, we are not going to use the symbol E naught. We are simply going to use the symbol E. Okay? I have सर explained एक that already. क्वेश्चन है So it's वैसे ही जी 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 से ज्यादातर हम बात जिंक की करें किसी और मेटल की नहीं करेंगे मतलब आप किसी भी मेटल की कर सकते हैं ये तो आसानी के लिए नहीं जिंक सर की बात की ज्यादा जा रही है जिंक डिस्कस हो रहा है हाँ जिंक और कॉपर के रिएक्शन ज्यादा डिस्कस होते हैं क्योंकि साइंटिस्ट ने इतनी ज्यादा वर्किंग जिंक और कॉपर पे की थी एंड अपार्ट फ्रॉम जिंक एंड कॉपर आयरन however we may go for any reactions of any metals and I hope you remember that we have done these reactions as a part of experiments in AS and we have used aluminium we have used magnesium we have used copper we have used iron ठीक है तो हमने और भी काफी सारे मेटल ट्राई किए हैं ठीक नहीं सर वो बस मैं पूछा था कि ज्यादातर वो जिंक ही डिस्कस कर रहे हैं because it's easier to discuss because it's a convention ज़्यादातर experiments भी zinc और copper के हुए cells भी शुरू में zinc और copper के ज़्यादा बनाए गए that's fine ठीक है बस एक convention है एक तरीका है उसे discuss करने का एक easier method है ठीक what happens to electrode potential when we change the concentration of ions in a half cell it is the example of metal ion equilibrium which is zinc ions equilibrium E naught value of minus 0.76 volts. If zinc ions are greater than 1 mole per decimeter cube, okay, the value of E becomes less negative or more positive. For example,
it can go from minus 0.76 all the way to minus 0.61 volts if zinc ions concentration is greater than 1 mole per decimeter cube. However, if that concentration is less, the value becomes more negative or less positive, for example, minus 0.80 volts. Now, comparing these mathematical values for this equation, you need to keep in mind the Le Chatelier's principle that we have studied previously. All right, so if the value of Zn plus ions is greater than 1 mole, now Zn plus ions are present at the left-hand side of the equation. If their concentration is higher, according to Le Chatelier principle, the reaction should go forward. Okay? When the reaction goes forward, this value actually becomes less negative and more positive. Okay? This value सर इसका becomes मतलब मोर पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि बहुत ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता रहेगा क्या चीज नाम लेकर बताएं आप जिंक एग्जैक्टली किस स्पीसीज की बात कर रहे हैं जिंक या जिंक आइंस जिंक की सर जिंक आयन जिंक की जिंक एक्चुअली जिंक आइंस रिड्यूस हो रहे हैं तो जिंक आइंस अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाते हैं तो आपकी बात अगर ऑपोजिट ली जाए तो ट्रू है जो आप कह रही हैं उस हिसाब से फॉल्स है ठीक है ध्यान से देखिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ठीक है एक सेकंड होगा मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं होपफुली आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ना हो बेशक पूछ ले मोस्ट वेलकम ठीक है जिंक आयंस आर गेटिंग रिड्यूस्ड हियर ठीक so that means zinc ions are oxidizing agents over here जिंक के लिए इस रिएक्शन को इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें जिंक से इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ लिखकर माइनस में लिखना होगा which means zinc is getting oxidized to get oxidized zinc will become a reducing agent over here okay so we are considering zinc as a reducing agent and zinc ions as oxidizing agents over here because zinc ions are getting reduced and zinc is getting oxidized for these standard values ठीक I hope that explains the answer in detail for Aisha's question. Yes, yes. Now let's come to Roma's question. जिससे मेरा भी क्वेश्चन आंसर हो गया Okay, good. Okay, so talking about zinc ions, it means it goes in a forward direction. Now, why is this value getting more positive for forward reaction? Why? Because E naught values are higher positive for good things that get reduced in a better way. So if zinc ions concentration is more, they will get reduced more and hence a higher positive value or a low negative value over here. Hence minus 0.76 volts will go down to minus 0.61 volts. Okay? And if we talk about zinc ions in such a way that zinc ions have less than 1 mole per decimeter cube concentration. So if concentration is less, the forward reaction would also be less. In fact, there would be more reverse reaction. And in that case, if it is not getting reduced so much, the answer will become a higher negative or less positive, which in this case goes from minus 0.76 volts to minus 0.80 volts. I hope I explained both of these points by this example. If you still have any questions, please ask. सर ये मोर लाइक सर द सेकंड पॉइंट सर है ये समझ नहीं आया जी सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें Second point समझ नहीं आया. Okay. अगर जिंक आयंस की concentration less होगी, less than 1 mole per decimeter cube, it means Le Chatelier principle के हिसाब से forward reaction नहीं होना चाहिए, reverse reaction ज़्यादा होना चाहिए. जब reverse हो रहा है, तो actually zinc oxidize होगा तो reaction reverse होगा, यानी zinc electrons lose करेगा, तो आपके पास ये वाले species form होंगे. और oxidation reactions जो होते हैं, उनकी higher negative values होती हैं. Which means कि minus 0.76 से किसी higher negative value पे जाएगा, which is minus 0.80. जी अली सर अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल आ गया और हम ये ली शेटलियर प्रिंसिपल से बता दें इसका आंसर करने के क्यों ज्यादा पॉजिटिव और ये ज्यादा नेगेटिव तो सर मार्क्स कटेंगे कि नहीं नहीं क्यों कटेंगे बेटा ली शेटलियर प्रिंसिपल ये नीचे के पैराग्राफ में लिखा हुआ है व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग इज एक्चुअली कोटेड ओवर हियर बाय द सेम नेम you so are supposed to answer it on the Le Chatelier principle जी कहें so nearest equation से वो कह रहे थे एक्सप्लेन ज्यादा करें हाँ देखिए अभी तक तो हम Le Chatelier principle पढ़ रहे हैं इस वजह से मैं उससे समझा रहा हूँ हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक तो है मार्क्स नहीं कटेंगे ना मार्क्स नहीं कटेंगे ना
डिपेंड्स कि आप क्या अगर कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सही किस बेस पे है। अभी तो आप लीशर्टली प्रिंसिपल पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, ये आसान लग रहा है जी कि सर। आप कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, मैं आपको लर्नर्स से क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, तो लर्नर्स से आपको ये आइडिया होगा कि आपके लिए लीशर्टली प्रिंसिपल के बजाय लर्नर्स इक्वेशन से एक्सप्लेन करना ज्यादा इजी है, वो ज्यादा सही अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस में भी वो ज्यादा आई, इसमें कोई शक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। पास पेपर उठाकर देखें तो ली शटलियर प्रिंसिपल की बजाय वो ज्यादातर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगते हैं ना इस पे, क्योंकि ली शटलियर प्रिंसिपल बिलोंग्स टू एन आईजीसीएसई कॉन्सेप्ट व्हाइल दिस नन इज एक्चुअली ए लेवल कॉन्सेप्ट। तो रिकमेंड मैं भी यही करूंगा कि आप ए लेवल कॉन्सेप्ट को ए लेवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर करें, ओ लेवल से ना आंसर करें। बट यस, उस तरतीब से आंसर किया जा सकता होता है, लेकिन समटाइम्स क्वेश्चन में, अब हम कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन चूंकि नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं एक जेनेरिक रिप्लाई दे रहा हूँ इस बात का कि अभी चूंकि कोई क्वेश्चंस कोटेड नहीं है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस इस तरह से कोटेड आएंगे कि वो आंसर लर्नर्स इक्वेशन की ही बेस पे मांगेंगे, तो हाँ, हम उसी तरह आंसर करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और फिर फिक्र ना करें, वो लीशर्टली प्रिंसिपल से ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इनको हैंडल करने के लिए वो ज्यादा अच्छा प्रिंसिपल है, वो ज्यादा एक्यूरेट है, वो ज्यादा सही क्वेश्चन से तो एक्सप्लेनेटरी वैसे भी कुछ है। समझ तो नहीं आता। हाँ, वो अभी इसलिए क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, एक दफा मुझे समझा लेने, होपफुली दैट वुड कम इजी टू यू। ओके सर। ठीक है, so so far if you have any questions from this Lee clear principle portion, please ask. If you don't understand the example of any of these 2 points, please ask. No, sir. Okay, good. नो सर। तो So दूसरे वाले सर पॉइंट समझा सेकंड दें। पॉइंट, जी सर सेकंड पॉइंट समझा दें। second point दोबारा समझ लेते हैं। If zinc ions are less, ठीक है, there would be less forward reaction and more reverse reaction. When there is less forward reaction, that means there is less reduction. When there was a more reduction value, it is supposed to be more positive, and when there is less reduction, it is supposed to be more negative. As the second point says, it becomes more negative and the values go from minus 0.76 to minus 0.80. ठीक, I think it's जी सर। explanatory, but अभी भी आप लोगों को सेकंड पॉइंट में इशू हो रहा है, तो एग्जैक्टली वो पॉइंट पूछें कि मैं बता सकूं, क्योंकि मैं सेकंड पॉइंट को 2 मरतबा एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप क्वेश्चन अपने वर्ड्स में करेंगे तो हो सकता है मैं वर्ड्स चेंज करके आंसर करूं और ज्यादा अच्छा समझ आ जाए। और समझ आ गया ठीक, नहीं तो क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछें ताकि मैं एक एग्जैक्ट टारगेटेड आंसर दूं आपको। नहीं सर समझ आ गया। उजैमा, आपको भी क्लियर हो गया बेटा? जी सर। It means all of us are clear and the same page, right? I can move forward, right? Yes, sir. Okay, so moving on, we can now always apply Lee-Chatter's principle for redox equilibrium. If we increase the concentration of the species on the left of the equation, the position of equilibrium will shift to the right, as I explained. So the value of E becomes more positive and less negative. However, vice versa is also true, which means the concentration of the species on the right, if increases, the position of equilibrium will shift to the left, and of course, this E values becomes less positive and more negative. The first case is explained in first point. The second case is explained in second point. Okay, sorry. If two different ions are present in half cell, we need to consider both ions. Let us take an equilibrium between iron positive 3 and positive 2 ions as an example. Now, उज़ैमा, आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि हम बार बार जिंक को क्यों कर रहे हैं। हम बार बार जिंक को इसलिए भी कर रहे होते हैं कि इन लैब परफॉर्मेंस विद जिंक इज इजी। इसकी ई नॉट वैल्यू ऐसी है कि इससे ऊपर या नीचे शिफ्ट करना हमारे लिए आसान होता है। जिंक इजीली अवेलेबल होता है, जिंक का +2 सॉल्ट यानी कि जिंक सल्फेट भी बहुत इजीली अवेलेबल होता है। अब देखिए उसी ये तरह सेफ से भी जब होता है हम, सर इसलिए? जी सेफ भी होता है इसलिए करना? या इट्स कंप्लीटली सेफ, दैट्स फाइन, ठीक है। और जब हम आते हैं आयंस पर, तो उसने जिंक को छोड़ के उसने आयरन की एग्जांपल क्यों दी? अब केमिस्ट्री में जो हम एग्जांपल्स पढ़ रहे होते हैं उनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। देखिए जिंक के केस में आपके पास 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट पे आयंस इस तरह से नहीं एग्जिस्ट करते जैसे हमारे पास आयरन में करते हैं, और जितना उन्हें इजी रीड करना है। फॉर एग्जांपल आयरन +2 और +3 की स्टेट्स बहुत इजीली अवेलेबल भी है, नंबर 1। नंबर 2, इनमें इतना बड़ा कलर चेंज है कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट को लैब पे परफॉर्म कर रहे होंगे तो जो नेकेड आई ऑब्जर्वेशन है वो ही बहुत आसान होगी।
Now you know iron 3 has a red brown appearance, whereas iron 2 has a dirty green appearance. तो इस तरह के appearances के साथ work करना हमारे लिए easy होता है. Hence, most of the equations in this book is either regarding zinc or regarding magnesium, which is safe but reactive, ठीक है, with iron and with copper. और किसी किसी जगह पर हम silver भी use कर देते हैं. Why? Working with them is easier rather than working with other metals. ठीक है, इसी वजह से इसकी एग्जांपल्स भी ज्यादा कंसीडर की जाती हैं. सही. अब इस एग्जांपल पर आए. Iron 3, which has a red-brown appearance, is also considered in 1 mole per decimeter cube, as well as iron 2, which is also 1 mole per decimeter cube. The standard E naught value is plus 0.77 volts. Now, before I go on to the next page, what do you think is going to happen if we increase the concentration on the left-hand side species? अगर iron 3 की concentration बढ़ाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी ज्यादा ज्यादा वैल्यू, रिएक्शन हो जाएगा सर. ई नॉट वैल्यू कम हो जाएगी, Fe2 ज्यादा नहीं सर, ये नॉट बढ़ नहीं जाएगी. ज्यादा प्रोड्यूस, हाँ ज्यादा हो जाएगी, ई नॉट वैल्यू ज्यादा हो जाएगी. अब वही कह रहा है, बस ठीक थोड़े है. रिफ्रेश नहीं कर सकता. एक मिनट सर, फॉरवर्ड रिडक्शन हो रही है. हाँ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो फॉरवर्ड जाएगी. रिएक्शन ज्यादा हो रहा है. फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, रिडक्शन ज्यादा हो रही है, ठीक है. और हमारे पास अब इस केस में क्या हुआ, क्योंकि रिडक्शन ज्यादा हो रही है, ठीक, तो हमारे पास ई नॉट की वैल्यू बढ़नी चाहिए. लेकिन लेकिन इसने ऊपर कहा था कि जब हम दो डिफरेंट आयंस ले रहे होंगे तो हमें दोनों आयंस को कंसीडर करना है, ठीक है. अब इस हिसाब से चलते हैं. सही. If Fe plus 3 is greater than 1 mole per decimeter cube, keeping Fe plus 2 is equal to 1 mole per decimeter cube, the value of E becomes more positive. ठीक है, आप लोग की बात ठीक है, but in this bracket he's writing that Fe plus 2 has to stay 1 mole per decimeter cube. If Fe is becoming greater, only then the value of E will become more positive. बात क्लियर हो गई. दोनों आयंस को कंसीडर करने का तरीका ये है कि अगर एक ही कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को कंसिस्टेंट रखेंगे या एक वैल्यू पर ही रखेंगे ताकि हम ई के अंदर एक प्रॉपर चेंज देख सकें. अब वो ई नॉट नहीं रहेगा, अब वो ई की वैल्यू बन जाएगी क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी स्टैंडर्ड वैल्यू से. ठीक. उसी तरह से अगर Fe को कम करेंगे लेकिन Fe3 को कम करेंगे और Fe2 को हम 1 पे ही रखते हैं तो वैल्यू E की जो है वो लेस पॉजिटिव होती जाएगी. अब एग्जांपल साथ साथ कोटेड हैं कि हम उसे कंपेयर कर सकें ओरिजिनल इक्वेशन से. डोंट फॉरगेट ओरिजिनल इक्वेशन में हमारे पास, मैं इसे पिछले पेज पर ले जाके दिखा भी देता हूँ, 0.77 दिया हुआ था पॉजिटिव में. तो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल में 0.77 से 85 हुआ हायर पॉजिटिव एज यू ऑल सेड. ठीक है. और सेकंड सिनेरियो पे आते हैं तो ऑफ कोर्स लोअर पॉजिटिव 0.70. सही. अब ऑपोजिट पे जाते हैं. हम Fe2 की कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, Fe3 को कंसिस्टेंट कांस्टेंट रख रहे हैं. If Fe2 is greater than 1 mole, then it's 0.70, vice versa, just like the second case. And the fourth case is somewhat familiar to the first one, in which Fe plus 2 is less than 1 mole per decimeter cube, but we kept Fe plus 3 constant at 1 mole per decimeter cube, and the value of E became more positive, i.e. 0.85 volts. Are we clear about all 4 points? Yes, sir. जी सर. Okay, good. ठीक है. So you can see from the above that if we increase the concentration of both Fe positive 3 and positive 2 ion, these effects may cancel each other out. So here, what's important is that we need to consider both ions. If you're changing the concentration of both ions in the same way, they might change each other or cancel out each other's effects. However, if you keep one constant or change the other, then you can go exactly according to the Chatelier principle and calculate your answer. ठीक. How can we predict whether or not a सर given ऐसा reaction? क्यों होगा कि वो कैंसिल हो जाएंगे? Because बेटा इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज जो है वो दोनों साइड्स पे इक्वल हो जाएगा. एक ही इलेक्ट्रॉन है ना. हम वापस जाते हैं क्वेश्चन को गौर से देखते हैं. सॉरी. और अगर हम सर वही रेशियोज की सेम ना रखें चेंज की, तो जिसका इफेक्ट ज्यादा है और आंसर हम उसके हिसाब से आएगा. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल मैं इस बात को क्लैरिफाई कर देता हूँ और हम ऐसे कहते हैं कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज लेते हैं ताकि आपके आंसर को ज्यादा एलैबोरेट किया जा सके. टेक अ लुक एट दिस इक्वेशन.
In this equation, Fe plus 3 is 1 mole per decimeter cube as well as Fe plus 2, which is also 1 mole per decimeter cube. Okay? There is a single electron that is involved. When that electron is added to Fe3, that is reduction and produces Fe2. However, when Fe2 reduces, uh, gives that electron out or oxidizes in other words, it produces Fe3. Right? सो उसी इलेक्ट्रॉन का अगर हम सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं दूसरे को कांस्टेंट रख के तो हमारे पास इस वैल्यू के अंदर एक प्रॉपर चेंज आता है लेट्स सपोज अगर आप दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन एट द सेम टाइम बढ़ा देंगे और लेट्स सपोज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप दोनों को एक साथ डबल कर देंगे इसे भी 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कर दिया इसे भी 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कर दिया तो पॉसिबली ई का आंसर वो सेम ही आ जाएगा व्हाई बिकॉज़ जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इससे ऑक्सीडाइज होंगे उतने ही इसमें रिडक्शन में भी जा रहे होंगे जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा उतना ही रिवर्स भी हो जाएगा however हम इसमें एक और मैथमेटिकल चेंज करते हैं जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन रोमा मोर क्लियरली ठीक है हम एक को डबल कर देते हैं जबकि एक को 1.5 टाइम्स बढ़ाते हैं लेट्स सपोज Fe plus 3 को हमने 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब किया लेकिन Fe plus 2 को 1.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब किया तो स्टिल इसकी कंसंट्रेशन Fe plus 3 की कंसंट्रेशन ज्यादा है Fe plus 2 की कंसंट्रेशन कम है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हायर पॉजिटिव वैल्यू होती है बिकॉज़ देयर इज मोर रिडक्शन आर वी क्लियर सर अगर हम एक की बढ़ा दें एक की कम कर दें डिपेंड्स अगर आप लेफ्ट वाले At की the बढ़ा same रहे हैं और time. राइट वाले की कम कर रहे हैं तो हायर पॉजिटिव वैल्यू और वाइस वर्सा लोअर पॉजिटिव वैल्यू इस तो फिर भी आ रहा है तो जो चेंज हो जाएगा वो डबल हो जाएगा ठीक है ना लेट्स सपोज मैं आपके आंसर के लिए बता रहा हूँ जब हमने इस तरह काम किया था कि हमने लेफ्ट वाले की वैल्यू बढ़ाई थी कॉन्सेंट्रेशन में राइट वाले को नहीं बढ़ाया था तो ये 0.77 से 0.85 पे चला गया ठीक है हायर पॉजिटिव वैल्यू की तरफ चला गया ना जब ज्यादा रिडक्शन हुई लेट्स सपोज हम Fe plus 3 को बढ़ाते हैं और एट द सेम टाइम Fe plus 2 को कम भी कर देते हैं तो वो जंप डबल भी हो सकता है 0.77 से 0.85 की बजाय 0.77 से 0.93 वोल्ट्स पर जा सकता है जी सर get the point it's much more mathematical ठीक है इसे मैथमेटिकली काफी अच्छे तरीके से किया जा सकता है so coming back to our original lines how can we predict whether or not a given reaction will occur under non-standard conditions non-standard conditions में ऐसा भी हो सकता है reaction possible हो और ऐसा भी हो सकता है कि reaction की feasibility ना रहे हम पहले ये बात consider कर चुके हैं कि some reactions are feasible while some reactions aren't ठीक है so the answer that is that if the E naught values of the two half cell reactions involved differ by more than 0.30 volts, then the reaction predicted by the E naught values is highly likely to occur. So chlorine is likely to oxidize Fe2 ions even if the conditions are not standard. This is because the difference in the E naught values is 0.59 volts, which is considerably greater than 0.30 volts. Take a look. Chlorine is being reduced into chloride ions. Iron 3 is being reduced into iron 2 ions. The E naught values of both the reactions are 1.36 and 0.77 volts respectively. The difference is 0.59 volts. Okay? And this difference as is higher than 0.30 volts, then this reaction is more feasible. Right? However, we cannot predict with confidence whether the reaction between manganese ions and chloride ions will take place if the conditions are too far from standard. Take a look, 0.15, sorry, 1.52 volts and 1.36 volts. The difference is only 0.16 volts, which is considerably smaller than 0.30 volts. Hence, in this case, with changing the conditions far from standard, we will not be able to predict with confidence what would happen or whether the reaction would even happen or not between manganese ions and chlorine. Okay, so the figure 0.30 volts given here is to enable us to tell if a reaction will still occur under non-standard conditions is a rough guide. ठीक है ये सिर्फ रफ एस्टिमेशन के लिए 0.30 वोल्ट से ज्यादा का डिफरेंस होगा
तो probably बहुत higher non standard conditions के अंदर भी आपकी working जो होगी वो वैसी होगी जैसी आप predict कर रहे हैं। लेकिन अगर ये डिफरेंस छोटा होता जाएगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे 0.16 वोल्ट्स का डिफरेंस था, तो जैसे जैसे ये ई स्टैंडर्ड से या स्टैंडर्ड कंडीशन से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे प्रेडिक्शंस गलत होने का चांस बढ़ता जाएगा, अनएक्सपेक्टेड आउटकम आने का चांस बढ़ता जाएगा। क्लियर इनफ? जी सर। जी सर। Okay, if there are no questions, let's take a break over here, and after you come back from the break, we're going to go with the next equation. Take a 5 minutes break. We'll meet back at कितनी देर 12. की सर? 5 minutes. We'll meet back at 12. Okay? Okay, see you at 12 class. Allah Hafiz.